Hello my little learners, this is Anshna, your maths trainer, and we are going to start with grade 7, new chapter number 10, that is Algebraic Expressions. So, we'll first do the warm-up. Now, look at the pattern and fill in the boxes. You have the number of tiles joined and number of shaded junctions. So, when there is, you can see the pattern. 2, 3, 4, 5, 6. Then if I write down number of shaded junction is 1 here. Then we have 2 junctions. You can write down 3 junctions for 4 and for 5 there will be 4 junctions. It's 1 less, right? और 6 के लिए 5 junctions हो जाएंगे. तो जितने junctions हैं उनको join करने के लिए वो एक junction कम है. तो 10 के लिए 9 junctions होंगे और 12 के लिए 11 junctions. Very good. And next question देखते हैं. Given that rupees X is the cost of 1 mango and Y is the cost of 1 apple. आपको 1 mango की cost दी है X rupees और 1 apple की cost दी है rupees Y. Match the baskets with the correct amount. अब जहां पर 10x लिखा है that means basket में 10 mangoes होंगे तो ये basket यहाँ match हो गई. And this is 5y. y किसके लिए है? y is for apples. तो किस basket में 5 apples है वहाँ matching हो जाएगी. Then you have 2x and 3y. 2x का मतलब 2 mangoes and then we have 3 apples. So this is the combination here. Similarly, we can match others also. Now look at the next question. A car starts from point A, ये आपका point A है, and travels in the direction shown in the diagram. Now it is given that the distance between B and C, B और C का distance 2 किलोमीटर more than distance between A and B. तो A and B का distance हमें नहीं मालूम, हमने उसको x assume किया, तो यहाँ पर आएगा x plus 2, right? Now C is 2 किलोमीटर more than distance between A and B, and after that the distance between C and D, ये वाला जो distance है is twice the distance between A and B. A and B का distance x था तो ये distance हुआ 2x, right? And अब आते हैं distance AD पर. So distance between AD is 10 kilometer less than 3 times distance A and B. तो 3 times distance A and B का मतलब 3x और 10 less का मतलब -10. तो इससे हमें सारे distances पता चल गए. Now if the distance between A and B is x kilometer, then find the distance between B and C. हमने B and C का distance निकाला, क्या आया? x plus 2. And distance CB is 2x. And what is distance AD? AD distance कितना हुआ? 3x minus 10. Very nice. Read the next question. Given that Anu's present age is x years, find the present age of her brother, mother and father if her brother is 3 years elder to her. इसका मतलब brother की age हो गई 3 plus x and her mother's age is 2 years more than 6 times her age. तो इसका मतलब 6 times her age में 2 ऐड किया तो ये हुई मदर की एज. एंड फादर एज इज 1 year more than 7 times her age. अब 7 times का मतलब हुआ 7x, तो फादर की एज हो गई 7x and 1 more, इसका मतलब +1. So this way you can solve different variety of problems. अब हम आते हैं generating algebraic expressions. So children, as we solve more and more algebraic expressions, we come across the patterns and the formulas
which help us in solving the problems. तो हम अपनी डिफरेंट वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, जैसे अभी हमने वार्म अप में किया था. एंड दीज पैटर्न्स एंड फॉर्मूलाज आर जनरलाइज्ड बाय मेनी सिचुएशंस. अब हम एग्जांपल लेते हैं. सो लेट अस फाइंड द कॉस्ट ऑफ डिफरेंट नंबर ऑफ पेन which cost ₹5 per pen. एक पेन की कॉस्ट ₹5 है. वन पेन will cost ₹5. So cost of 2 pens हो गई ₹10. 3 pens will come in ₹15, है ना. And we will make a table and we will observe कैसे कैसे पेन्स इंक्रीज हो रहे हैं और उसके पैरेलली उसकी कॉस्ट भी इंक्रीज हो रही है. तो 1 पेन ₹5, 2 पेन ₹10, 3 पेन ₹15. ऐसे ही अगर हम 8 पेन्स पर आते हैं तो ₹40. Got it? So अगर हम n पेन्स की बात करते हैं तो एक जनरलाइज स्टेटमेंट पे आ जाते हैं, दैट इज इक्वल टू 5n. तो n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है. अगर हमने लिखा 25 पेन्स तो 5 multiply 25, that becomes the cost of 25 pence. And this way n keeps on changing. Got it? So numbers like n are referred as variables. क्यों इनको variables बोलते हैं? क्योंकि इनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, इनकी वैल्यू हर बार चेंज होती रहती है. राइट नाउ अब हम आते हैं जनरलाइज पैटर्न डेवलप करते हैं. यहाँ पर हमारे पास टाइल्स हैं एंड सी वी हैव अ टाइल, देन उसका जॉइंट, सेकेंड टाइल उसका जॉइंट. तो हमने क्या ऑब्जर्व किया, अगर हमने 1 टाइल पुट की तो कोई जॉइंट ही नहीं है. 2 टाइल्स के लिए 1 जॉइंट है, 3 टाइल्स के लिए 2 जॉइंट्स हैं, ऐसे 10 टाइल्स के लिए 9 जॉइंट्स हैं. राइट अगर 100 टाइल्स हैं तो इसका मतलब 99 जॉइंट्स हैं. तो नंबर ऑफ जॉइंट्स कितना हुआ, नंबर ऑफ टाइल्स -1. तो अगर x टाइल्स हैं तो नंबर ऑफ जॉइंट्स होगा x -1. करेक्ट. नाउ लुक एट दिस पैटर्न. यहाँ पर एक ट्राइंगल बना बाय द हेल्प ऑफ मैच स्टिक्स. सो 1 ट्राइंगल इज मेड बाय 3 मैच स्टिक्स. 2 ट्राइंगल्स के लिए हमें 6 मैच स्टिक्स चाहिए, 3 ट्राइंगल्स के लिए 9 मैच स्टिक्स चाहिए एंड इट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग. तो हमने ऑब्जर्व किया कि जितने भी ट्राइंगल्स हैं उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें नंबर ऑफ मैच स्टिक्स मिल जाएंगी. सो y is equal to 3 times of x. Correct? Now we come to third example. Let the number of posts is x and the number of railing is y. So what do you see? हमने देखा कि पोस्ट और रेलिंग का एक रिलेशन बना है. कैसे बना ये रिलेशन? दिस इज 1 and we have 0, then 2, we have 4, 3, we have 8, 4, we have 12. So we observe that the above answers are 3x and 4x minus 4. They both are algebraic expressions, right? तो इस तरह से कोई ना कोई रिलेशन क्रिएट करते हैं और उस रिलेशन को हम बोलते हैं algebraic expressions. Now we have an exercise here. इस exercise को करते हैं. Write the general formula for the number of matchsticks used or making the figure. तो first question में यहाँ first figure है 1 figure and how many matchsticks are used here. देखो यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6. So we write down 6. Similarly 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11. And this way we'll write 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. So we are writing here 16. So what do you observe? We observe कि next figure देखते हैं. 3 and 3, 6. Then we have 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 and 21. तो हमने ऑब्जर्व किया कि 6 में +11 हुआ, +5 हुआ, फिर +5 हुआ,
फिर उसके बाद फिर +5 हुआ, दैट मीन्स आपका 6 तो हो गया कांस्टेंट। एंड कितने ट्राइंगल्स बने, उसमें हमने n-1 करके और 5 से मल्टीप्लाई किया। ओके, तो हर बार 5 ट्राइंगल्स, 5 स्टिक्स ऐड हो रही हैं एवरी टाइम व्हेन यू इंक्रीज द शेप। ओके, यहाँ पर इसी तरह से फर्स्ट फिगर में, सेकेंड फिगर में और थर्ड फिगर में हमने डिफरेंट डेटा ऑब्जर्व किए और हमने लिखा फर्स्ट टाइम 5 multiply 1 plus 1 and in this way 5 multiply 2 plus 1 and then after that 5 multiply 3 plus 1। तो ये हमारा जनरलाइज्ड फॉर्मूला बनकर आया and we write down 5 multiply x plus 1। ये आपका जनरल फॉर्मूला बन गया। Got it? In this way you can try other questions. Now we come at terms used in the algebraic expressions. तो अभी तक हमने generalized formation सीखा था and we have learned कि जो ये x, y, z होते हैं इनको हम बोलते हैं variables। and कुछ भी numbers आपके अगर expression में use होते हैं, number 1, 2, 3, 500, any number, it can be negative number also, इनको हम बोलते हैं constants, right? तो algebraic expression is the combination of literals, numbers and arithmetic operations। इसका मतलब जब भी आप algebraic expression बना रहे हैं उसमें कोई number आएगा, उसमें कोई variable आएगा, उसमें कोई mathematical operator आएगा। So algebraic expressions have terms which are connected together with operations of addition and subtraction। अब algebraic expression में हमारी different terms होती हैं। कुछ terms constant भी हो सकती हैं, कुछ terms सिर्फ variables भी हो सकती हैं और कुछ terms constant और variables के combinations भी हो सकते हैं। Got it? Now we move further and here we have a algebraic expression। अब हम देखते हैं यहाँ एक algebraic expression। तो हमें algebraic expression दिया हुआ है 7p² plus 3pq minus 50 and ये 3 different terms। So we say that we have 3 terms and each term is the combination of constants and variables। तो first term है हमारी 7p², इसका मतलब है 7 multiply p multiply p multiply q। Okay, so these are the factors of this term। Similarly यहाँ पर 3pq के factors हैं 3 multiply p multiply q and minus 50 is a constant term। अब हम इसको ट्री डायग्राम की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहले हमने तीनों टर्म्स को लिखा एंड इन टर्म्स को फैक्टर्स की फॉर्म में ब्रेक कर दिया, राइट? सो दिस वे वी गेट 3pq as 3p and q and minus 50 is only minus 50। अब हम बात करेंगे किस तरह के algebraic expression होते हैं। तो फर्स्ट कैटेगरी ऑफ algebraic expression है मोनोमियल, जिसमें सिर्फ वन टर्म होती है। वो कांस्टेंट भी हो सकता है, वो वेरिएबल भी हो सकता है। दैट्स कॉल्ड अ मोनोमियल। And if there are two terms 2x plus 3 then we say it is a binomial। binomial का मतलब two terms वाला। Similarly we take 3 terms। यहाँ पर आपका एक पूरा algebraic expression है जिसमें 3 terms हैं and we call it trinomial। Tri means 3, got it? And in a polynomial there can be any number of terms ranging from 1 to n। तो 1 टर्म वाला हो, 2 टर्म वाला हो, 3 टर्म वाला हो, 4 टर्म वाला हो, इनको एक जनरल नेम दिया जाता है, उसको बोलते हैं algebraic expression with any term, that's called a polynomial। Okay, now if algebraic expression has these terms we will say they are not a polynomial, क्योंकि यहाँ पर जो आपका वेरिएबल है वो डिनोमिनेटर में चला गया या आपका जो भी वेरिएबल है उसकी पावर नेगेटिव हो गई, then they are not a polynomial। So that's very important thing। See the difference, यहाँ पर constant denominator में है, यहाँ पर आपका constant denominator में
बट यहाँ आपके वेरिएबल्स डिनोमिनेटर है, so they cannot be a polynomial, but they can be a polynomial because denominator does not have a variable. Now let's move further. We will say some notes. So binomial and trinomial are also polynomials, and very important thing, number which are multiplied with the variables, उसको हम एक special name से बुलाते हैं, we call them coefficients. So let's say the example, we take a number x and then we add 5 to it, तो ये बना x plus 5 and divide the result by 3. इस पूरे result को 3 से divide किया, you have to write the statement. तो हमने लिखा x added with 5 and divided by 3. This becomes the algebraic expression. Now you can write the following statements as algebraic expression. So let's try. I think of a number, हमने number x लिया, then we add 7 and we multiply the result by 3. Again, I think of a number y, we multiply it by 9 and then we subtract 10 from it. तो इस तरह से हम algebraic expressions form करते हैं. Now we have an exercise. So from each of the following, find out the variables and terms which are only constant. तो यहाँ पर x square y square ये term with variables है, ये term with variable है, and 45 is a constant, right? Here minus 25 is a constant. Here 55 is a constant. And in the last one, we have minus 9 as a constant. The next question is, enlist the factors of each of the terms of the expression given below. तो इस expression में हमने factors बताने हैं. यहाँ factors क्या क्या है? We will write 5 and 8. So these are the two factors of 5, 8. Got it? And in this way, you can write it for other terms also. Fill in the blanks with the words from the list. Let's see the first one. The algebraic expression with only one term is called a monomial. We'll write here monomial. Okay. Next one. A binomial algebraic expression has two terms, right? Binomial की two terms होती है. It can also be simply called as polynomial. Then algebraic polynomial with three terms is a trinomial algebraic expression with more than three terms. When you talk of more than three terms, it is called an algebraic expression with more than three terms is called a polynomial, and all monomial, binomial, trinomial and polynomial are called by a name. क्या नेम है? Algebraic expression. Got it? Now classify as monomial, binomial and trinomial. Very simple. जहाँ single term है वो monomial होगा. So this is monomial, this is monomial, this is monomial, this is monomial. इसको monomial क्यों बोलेंगे? क्योंकि इसके बीच में कोई प्लस या माइनस का साइन नहीं है. So we'll say this is only one term. And this is a binomial. यहाँ दो terms हैं. ये भी binomial है, right? This is also binomial because यहाँ पर हमें two terms मिल रहे हैं. And three terms वाले जितने भी algebraic expressions हैं, हम उसको बोलेंगे trinomial. Got it? And let's move further. We'll be talking about the coefficients, then constants, and after that, we'll also learn about parts. So let's take the example of these monomials. The number which are multiplied to the variables, हम उनको बोलते हैं numerical coefficient. तो यहाँ 3, 5, 8 ये सब numerical coefficient है, right? And then here 3 is a numerical coefficient, और अगर हमने 3x लिखा तो x की power 1. Similarly 5x square में 5 is a numerical constant and x की power 2. So this power of x, and when you talk about 8ab cube, so 8 is a numerical coefficient and the power of a is 1, power of b is 3. Now as you have already seen, the terms which do not have variables multiplied to it, हम उसको special name से बुलाते हैं
they are constants. Okay, now we are going to consolidate. अभी तक हमने क्या सीखा है? यहाँ पर हमारे पास 4 terms हैं, तो यहाँ 5 जो है this is a constant term, and then 7, 9, minus 8 इनको बोलते हैं हम numerical coefficient of a x cube, b square y and z. Got it? Now we will talk about the exponent of x. Exponent of x is 3. यहाँ b की पावर या b का exponent 2 है. Similarly यहाँ z का exponent 1 है. और total हमारे पास कितनी terms हैं? We have 4 terms here. Got it? Now we'll learn about what are like terms and unlike terms. So specifically we observe that all the 3 terms mentioned in each of the following lists have same variable part in them. यहाँ पर आपने x, 5x, 8x, तो यहाँ पर common चीज क्या है? x. तो variable part जब same होता है हम उन terms को एक special name से बुलाते हैं. That's called like terms. And see here. Now see here we have 5xy, 3xy, 8xy. ये भी like terms हैं. Similarly, x square y, x square y, x square y. Numerical values change हो रही हैं, लेकिन the variable part is same, उनकी power same है, तो हम ऐसी terms को like terms बोलेंगे. Got it? But if you see x and x square, so यहाँ power 1 है, यहाँ power 2 है. We'll call them unlike. अगर मैंने लिखा 5x and 4xy, यहाँ पर variables different है, so they are unlike. तो ये आपके दोनों टर्म्स अनलाइक टर्म्स हो जाए. गॉट इट? अब हम आते हैं एडिशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. सो फर्स्ट थिंग इज जब आपको लाइक टर्म्स दी वेरी सिंपल थिंग, जो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स हैं हम उनको ऐड कर देंगे एंड द वेरिएबल पार्ट विल रिमेन सेम. सो सपोज वी हैव 5x square y and 7x square y. So we'll add 5 and 7, it becomes 12. We write down 12x square y. Got it? यहाँ पर 2abc minus abc. So your answer becomes 2 minus 1, that is 1, and abc को हम as it is कर देंगे. और जब constant 1 होता है हम उसको omit कर सकते हैं, तो आपका result बन जाता है simply abc. Now look here, we have another example. यहाँ पर 5xy दिया है और 2x square y दिया है. यहाँ पर न्यूमेरिकल पार्ट तो डिफरेंट है ही, बट द वेरिएबल पार्ट इज आल्सो डिफरेंट. सिमिलरली हियर 7a and 4b. So when the variables are not same, when the terms are unlike terms, we cannot add them or we cannot subtract them. Got it? Now the question is add these terms. सब variables same है, इसका मतलब सारी terms like terms हैं. So we'll write 3 plus 2 minus 5 plus 8 and we get 13x. पहले हमने addition part किया और उसमें से फिर minus वाला part subtract कर दिया. We get 8x as the answer. Correct? Now we move further. Take this example. Here we are having 2 categories of terms. तो पहली category of term है x square y. Right? हम x square y वाली टर्म्स 18x square और minus 7x square को एक साथ लाकर वेरिएबल पार्ट लिखेंगे x square y. Then we have 4xy square and then 13xy square. 4 और 13 दोनों पॉजिटिव है, उनको एक साथ लाएंगे और xy square लिखेंगे. And then we have a constant which is -3 which will come as it is. तो इस तरह से हम जो like terms होते हैं उनको ऐड करते हैं और जो दूसरा ग्रुप ऑफ लाइक टर्म्स है उनको ऐड किया एंड इस तरह फाइनली हमारे पास जो रिजल्ट आता है उसमें सारी जो अनलाइक टर्म्स होती है वो हमें नजर आती है. लेट्स टेक अनदर एग्जांपल एंड हियर वी आर एडिंग यूजिंग अ कॉलम मेथड. तो फर्स्ट एक्सप्रेशन लिखा a plus 2b plus 3c. सेकेंड एक्सप्रेशन में हमने लिखा 4a then plus 4b minus 9c, then we have minus 3a plus 5b plus 2c, right? And then we add them. 3 minus 9 plus 2 gives you minus 4c. Similarly 2b plus 4b
plus 5b is 11b, and a plus 4b then minus 3a will give you 2a. So what you are doing here, हमने सारी like terms को एक के नीचे एक लिखा and then we have combined them and we have performed addition and subtraction in it. Now we come to next question. Add 15a square plus 3ab minus 6y square, right? अब next expression में हमें दो terms देनी है, तो हम ये देखेंगे ये किस term की like term है. यहाँ minus 7a square will come under 15a square, minus 8ab will come under 3ab, and कोई भी term 6y square मतलब y square वाली नहीं है, so we are not going to write anything here. Okay, अब 15 minus 7 है 8, so we write down 8a square, and 3 minus 8 is minus 5, so we write minus 5ab and minus 6y square as it is आ जाएगा, and this is your final answer. Got it? And now take another method. इसी question को दूसरे method से करते हैं जहाँ पर हमने like terms को club किया, like terms a square वाली एक साथ आ गई, ab वाली एक साथ आ गई और जिसके साथ कुछ value नहीं है, and finally this is your answer. Now in this way we have another question of the same pattern which you can do by bringing the like terms one column under another. Now this is the exercise based on all the examples we did, so please do them yourself. अब हम आते हैं subtraction of algebraic expression. So this is another mathematical operator, and when we subtract one number from another number, rule कहता है we add the additive inverse of the number to be subtracted. That is subtrahend का additive inverse लिखेंगे और वो minimum में add कर देंगे. Correct? So we take the example. Suppose you have to subtract 4 from 7. तो हम इसको कैसे लिखेंगे? 7 plus additive inverse of 4, that is negative of 4 will be written, and हम इसको ऐसे लिखेंगे 7 plus negative of 4. तो सेम रूल आपका यहाँ पॉलिनोमियल्स में भी अप्लाई होता है. यू हैव टू सब्ट्रैक्ट माइनस 5a फ्रॉम 20a, तो माइनस 5a का एडिटिव इनवर्स होता है 5a. दैट मीन्स 5a को हम 20a में ऐड कर देंगे and this is your answer. Got it? You have to subtract 6a minus 3b from minus 8a plus 5b. तो minus 8a plus 5b पहले लिखा and minus करेंगे 6a minus 3b को, and then you will observe कि इसका additive inverse होगा minus 6a, इसका additive inverse होगा minus 3b. So what will you do? Plus 3b, right? So we are going to add them, and this is 8b. We are going to add them. This is minus 14a. This is your correct answer. Now moving further, read this next example. Very interesting example. Ram had minus 4x plus 12y plus 6z rupees, and he spent this much to buy new clothes. Now the question is how much money is left with Ram. तो पहले हमने money लिखी कि कितनी money already Ram के पास है. Got it? And after this you are going to subtract this. तो subtract करने के लिए 7 का negative हो जाएगा. This 3y will turn to positive and 8z will become negative. And then we are going to add them. We'll write down this much money is left with Rohan. Now coming to removal of brackets. Remove कैसे करते हैं? हमें अगर brackets दिए हुए तो bracket will be preceded by either plus or minus sign. अब bracket से पहले अगर plus sign है तो आप simply bracket को open कर देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. लेकिन bracket से पहले अगर minus sign है तो bracket के अंदर जितने भी variables हैं, जितनी भी terms हैं, उनके हमारे साइन ऑपोजिट हो जाएंगे. तो यहाँ b बना नेगेटिव, c बना पॉजिटिव और d बन गया नेगेटिव. ओके, तो पॉजिटिव टर्म नेगेटिव बन गई और नेगेटिव टर्म्स हमारी पॉजिटिव में चेंज हुई. टेक दिस एग्जांपल. यू हैव टू ऐड a minus 8 plus
b plus 6. तो a minus 8 ये रहा plus b plus 6. So we write down a plus b minus 8 plus 6, that becomes a plus b minus 2. Similarly, a minus 8 and minus of b minus 6. तो b बना हमारा नेगेटिव और 6 बन गया हमारा पॉजिटिव. ओके, तो हमें क्या मिला? minus 8 plus 6 and we get the final answer. Correct? Now after this, look here, x minus 7 यहाँ प्लस है, इसका मतलब इसके कोई भी साइन चेंज नहीं होंगे. यहाँ माइनस है तो इनके टर्म्स के सारे सिंबल्स चेंज हो जाएंगे. तो x minus 7 as it is, y minus 6 as it is, z बना minus z, 12 बना minus 12. Okay, and then we solve and get the answer. Similarly, we have to subtract this from this. तो दो मेथड्स होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल मेथड, एक वर्टिकल मेथड. तो हॉरिजॉन्टल मेथड से क्या करेंगे? पहले इस एक्सप्रेशन को लिखा माइनस इस एक्सप्रेशन को लिखा. अब इसके सारे सिंबल्स चेंज हो जाएंगे. 6x स्क्वायर बन जाएगा माइनस 6x स्क्वायर, 3x बन जाएगा, पॉजिटिव है ये, माइनस 3x बन जाएगा, एंड 4 बन जाएगा माइनस 4. अब हमने क्या करना है? लाइक टर्म्स को साथ ले आएंगे and then we finally perform the operation. This becomes your final answer. Correct? And then 3a minus 2b plus 3c and minus 6a minus 4b. तो सबसे पहले यहाँ पर इसके सिंबल्स चेंज करेंगे. 6a बना minus 6a, minus 4b बना plus 4b. अब हम कर्ली ब्रैकेट्स के बाहर आते हैं. कर्ली ब्रैकेट से बाहर माइनस का साइन दिया हुआ है, इसका मतलब इन सब के साइन चेंज हो जाएंगे. गॉट इट? तो 2b बना minus 2b, 3c बना, this is plus 3c, it turns to minus 3c, and 6a minus a है तो यहाँ बन गया पॉजिटिव, and 4b is positive, it turns to negative. अब क्या करना है? लाइक टर्म्स को साथ ले आएंगे and we get the final answer. Got it? Now remember the notes that like terms of algebraic expression can only be added or subtracted, and unlike terms cannot be added or subtracted. And when you subtract, we add the additive inverse of the subtrahend from the numerator. Got it? Now you have an exercise. Please do it yourself. अब हम आते हैं next topic पर, that is degree of a polynomial. So here let us take a trinomial. इस trinomial में कितने terms हैं? We have 3 terms, right? Similarly, we have next expression. इस expression में हमारे पास 2 terms हैं, तो हमने इसको बोला binomial. Similarly, अगर हमने 3y 6x लिखा, this is a monomial, क्योंकि यहाँ पर 1 term. अब थोड़ा सा आगे चलते हैं. हमने एक polynomial लिखा, इस पॉलिनोमियल में 3 टर्म्स हैं, एंड हियर वी ऑब्जर्व कि सबसे बड़ी टर्म जिसकी पावर 2 है, दिस इज 2a स्क्वायर. तो यहाँ पर इसकी डिग्री हो गई 2. सिमिलरली देयर इज अ बायनोमियल, इट आल्सो हैज द हाईएस्ट पावर 2. दिस इज अ मोनोमियल, बट यहाँ पर भी हाईएस्ट पावर 2 है. सो वी से दे आर ऑफ डिग्री 2. तो वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है, that is called a degree. Now look here, यहाँ पर this is a binomial, we have a polynomial, this is a monomial, और इसकी highest power 3 है, इसकी भी highest power 3 है. So we say that these are the polynomials with degree 3. Correct? Now after this we can even add the degree. अगर इसकी डिग्री निकालनी है तो x की पावर 3, y की पावर 2, तो इसकी डिग्री हो जाएगी 5. करेक्ट? यहाँ पर इसकी डिग्री बताएंगे 4 plus 2, that is 6. Correct? And this is called the degree. Now usually the polynomials are written in the decreasing order of power of their terms. तो हमें कोई भी polynomial दिया है, हम हमेशा ध्यान रखेंगे कि जो highest power होगी वो पहले आएगी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, and then comes constant. So you have to find the degree here. जल्दी से बताएंगे क्या डिग्री है? 4. Very nice. So we say the degree of the polynomial is 4, क्योंकि highest power इसकी 4 है.
and you have to find the degree here. तो पहले decreasing order में लिखेंगे. हमने लिखा x cube y cube, then we have written x square, then comes x, and then we have constant term 3. Up 3 plus 3 is 6, so the degree becomes 6. Got it? This is 3. Now after this we come to values of algebraic expression. तो value का क्या मतलब होता है कि हमें कुछ वेरिएबल्स दिए हुए और उन वेरिएबल्स को हम किसी नंबर से रिप्लेस कर रहे हैं, राइट? वी नो दैट algebraic expression has a variable and that variable can take any value. मैं अभी आपको एग्जांपल देती हूँ. So when the variable takes any value, the expression also takes a value. So let's say there is a book, उसकी cost हमारी y rupees है, right? And here y is a variable. Now if you are buying 5 books, तो आप कितना पे करेंगे? 5 multiply cost of 1 book, that is equal to 5y, and the value of the algebraic expression 5y completely depend on कि y की क्या value है. अगर एक book 100 rupees की है तो 5 बुक्स की कॉस्ट हो गई 5 मल्टीप्लाई 100. एक बुक की कॉस्ट अगर 50 रुपीज है तो 5 बुक्स की कॉस्ट हो गई 5 मल्टीप्लाई 50, राइट? सो कांस्टेंट वैल्यू के ऊपर के साथ जो वेरिएबल है उस वेरिएबल पर आपकी कॉस्ट डिपेंड करती है. नाउ लेट्स टेक द एग्जांपल. यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन जहां m की वैल्यू 3 है. तो m की जगह 3 रखेंगे. 20 मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर, 30 multiply 3 plus 40. Okay, and you solve it. After solving, we get 310. So we get the final answer as 310. Now, if I take m as -4, जहाँ जहाँ m लिखा है वहाँ वहाँ हमने -4 लिखा, उसको solve किया, and we get 240 as the answer. Correct? Let's move ahead. Formula and its part. The most interesting aspect of algebra is that it is the short form of arithmetic, and infinite number of arithmetic problems of similar type can be compressed into the algebraic expression, and we call it a formula. So you already know, जैसे हमने पैरामीटर निकाला था, पैरामीटर का एक फॉर्मूला बना दिया था, 2 multiply length plus breadth. So ये आपका फॉर्मूला हो गया जब भी आपने पैरामीटर कैलकुलेट करना है. ऐसे ही हमने सीखा था एरिया का फॉर्मूला, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ. सिंपल इंटरेस्ट निकालना है तो p मल्टीप्लाई r मल्टीप्लाई t अपॉन 100. तो इस तरह से हमारे फॉर्मूलाज हेल्प करते हैं वैल्यूज को निकालने. नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन. राइट द फॉर्मूला फॉर द नंबर ऑफ सेंटीमीटर्स इन n नंबर ऑफ मीटर्स. अब हमें मालूम है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं. सो वी आर टेकिंग इन n मीटर्स इट इज n टाइम्स 100 सेंटीमीटर. अब फॉर्मूला बनाया दैट सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई बाय n. तो c क्या है? c इज द सेंटीमीटर, n इज द नंबर ऑफ मीटर्स. ओके, नाउ सिमिलरली इफ अ किलोग्राम ऑफ पोटैटोज कॉस्ट ₹16, हाउ मच विल p kilograms of potato cost? तो 1 kg की कॉस्ट है 16 रुपीज, तो p kgs की कॉस्ट होगी p multiplied by 16. This is equal to ₹16p. So in this way we create the formulas. अब आ गई आपकी टर्न. You are going to try the exercise and we come to multiple choice question. So read the first part. Which of these is an algebraic expression? See, this is algebraic expression. This is also algebraic expression. No, this is a constant. And this is algebraic expression. So we say both A and C are algebraic expression. Which of these is a binomial? Binomial का मतलब जिसमें 2 terms होते हैं. So this is a binomial. And what is the degree of this polynomial? यहाँ पर a b c दोनों की 1 बार है 3, so this becomes 3. And if a is -1, then what is the value? So -1 का cube is -1. This is +1. This is -1. This is +1. And that means your answer becomes 0. So we'll say none of these.
finally we have a question. X is minus 2 and y is 2. So minus 2 का square हुआ 4 and again 2 का square हुआ 4. We get 8 as the result. So this way we have done all the parts. I hope the concepts are clear and you have really enjoyed learning so many concepts of algebraic expression. So we'll be meeting soon. Stay connected for the next video. Goodbye.